So hello and welcome everybody. Myself CMA Sanket Pandit. So just now a circular has been released by the institute regarding clarification of mandatory skill training which is there for intermediate students. So it is very clear, and the institute is telling that all intermediate pass out students of December 2023 are required to complete mandatory skill training to appear for CMA final examination, both group or remaining group. It is very simple and clear that all the intermediate students who have cleared their intermediate examination in December 2023 have to mandatorily undergo skill training to appear for CMA final examination. And in the second para, it is written, it is also clarified that intermediate students who have not qualified December 2023 term examination have to complete mandatory skill training in order to be eligible in June 2024 examination. So it is very clear, if you cleared your examination in December 2023 intermediate, then you have to do mandatory skill training. अगर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो या आपने नहीं करी है तो आपको करना है. तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के बात इतनी है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी थी तो आपको ट्रेनिंग करना है. अगर आप दिसंबर में पास हुए और आपने ट्रेनिंग नहीं करी तो भी आपको करना है. अगर आपने ट्रेनिंग कर दी, आपके पास सर्टिफिकेट है, सब है, तो कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसा कि दिसंबर में एग्जम्प्ट थी ट्रेनिंग 2023 के लिए, सो यू हैव टू मैंडेटरीली अंडरगो दिस ट्रेनिंग. एंड वन मोर नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट which I have shared on my WhatsApp channel. You can join the channel. The link is given in the description. So this circular I had already discussed. Means first notification had came कि if you have got exemption in financial accounts in syllabus 2016, then which paper will be exempted in syllabus 2022. So for every paper, the other paper is exempt. Like if you have cleared financial accounts in 2016, then in 2022 it is exempt. If you have cleared law, it is exempt. बस direct tax का problem है. So it is very clear that case 1 which is written here, that if you had got exemption in paper 7 and 11 in old syllabus, both your DT and IDT is exempt, then in new syllabus only your पेपर नंबर 7 विल बी एग्जम्प्ट विच इज़ DT एंड IDT कंबाइंड. सो अगर आपका DT और IDT पहले एग्जम्प्ट था दोनों, तो यू विल गेट एग्जम्पशन. अगर आपका सिर्फ DT एग्जम्प्ट था, केस 2, स्टूडेंट्स हु हैड ओनली एग्जम्पशन इन DT एंड पास्ट ग्रुप 2, ठीक है, ये भी घुमा फिरा के बोल रहे हैं, तो मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ. अगर आपके दोनों पेपर एग्जम्प्ट थे DT IDT, तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा. आपका सिर्फ DT एग्जम्प्ट था तो आपको नई एग्जम्पशन मिलेगा. आपका सिर्फ IDT एग्जम्प्ट था सिलेबस 2016 में, तो भी आपको 2022 में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. सो वेरी ओनली वन कंडीशन, इफ बोथ योर पेपर्स वेयर एग्जम्प्ट अर्लियर, देन दिस टाइम your paper will be exempt. If only one paper was exempt, let it be DT or IDT, then no paper will be exempt in the new syllabus. So this is it. This was the scheme. Both the things I have shared on my WhatsApp channel also. So this is it. Thank you so much.